भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की बैठक में कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि मानवाधिकारों के मामलों से निपटने वाली संस्थाओं को एहसास होना चाहिए कि आतंकवाद को कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही आतंकवाद के स्पॉन्सर्स की तुलना पीड़ितों से की जा सकती है। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और यह जीवन के अधिकार के सबसे मौलिक मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने डिजिटल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद मानव जाति के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, लंबे समय से इसका पीड़ित होने के नाते आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में भारत सबसे आगे रहा है। वह केवल तब हो सकता है जब मानवाधिकारों से निपटने वाली संस्थाओं समेत सबका इसका स्पष्ट एहसास हो कि आतंकवाद को कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके स्पॉन्सर्स की तुलना पीड़ितों के साथ हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस में 8 सूत्री कार्य योजना पेश की थी। उन्होंने कहा, हम अपनी कार्य योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य देशों के साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार एजेंडा के सामने निरंतर सभी तरह के आतंकवाद की चुनौतियां बनी हुई हैं। विदेश मंत्री ने कहा, मौजूदा महामारी के कारण कई स्थानों पर स्थिति और जटिल हो चुकी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम सबको साथ आने की ज़रूरत है। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और व्यवस्थाओं में सुधार की भी ज़रूरत है। जयशंकर ने कहा कि मानवाधिकार के उल्लंघन और इसके क्रियान्वयन में खामियों का चुनिंदा तरीके से नहीं बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए। देश के आंतरिक मामलों और राष्ट्रीय संप्रभुता में दखल नहीं देने के सिद्धांत का भी पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने कहा, हमने देश में स्वास्थ्य मोर्चे पर समाधान किया और दुनिया के लिए भी कदम उठाए। हमने इस महामारी से निपटने में मदद के लिए 150 से ज़्यादा देशों को जरूरी दवाओं और इक्विपमेंट्स की आपूर्ति की। With objectivity, non-selectivity, transparency and with due respect to the principles of non-interference in internal affairs and national sovereignty. As the Human Rights Council completes 15 years since its establishment, it is time for us to assess its achievements, reflect on its failures, and deliberate on the ways to strengthen and reform it so as to enable it to achieve the objectives for which it has been set up. India, as always, is ready to contribute in this endeavor. Madam President, the human rights agenda continues to face severe challenges, most of all from terrorism. The perennial concerns remain equally strong, be it global inequities or armed conflicts. The ongoing pandemic has complicated the situation in many geographies. There is a need for us to come together to overcome these challenges. At the same time, multilateral institutions and mechanisms need to be reformed to be able to deal with these effectively. Madam President, terrorism continues to be one of the gravest threats to humankind. It is a crime against humanity and violates the most fundamental human right, namely the right to life. As a long-standing victim, India has been in the forefront of the global action against terrorism. This is possible only when there is a clear realization, including in bodies dealing with human rights, that terrorism can never be justified, nor its perpetrators ever equated with its victims. We presented last month at the UNSC an 8-point action plan to deal with the scourge of terrorism. We will continue to work together with members of the UNSC and other states to ensure implementation of our action plan. India's abiding commitment to promotion and protection of basic human rights has been manifest in our strategy to deal with the COVID-19 pandemic. By giving direct food support to 800 million Indians and financial support to 400 million, many of them women,
We ensured that basic needs were very effectively addressed even during the lockdown. And as we addressed the health front at home, we responded to the world in equal measure. We provided essential medicines and equipment to more than 150 countries to assist them in this fight. In the same spirit, India has pledged to use its vaccine manufacturing capacity to make vaccines accessible and affordable to all. From Bangladesh to Brazil and from Morocco to Fiji, the pharmacy of the world is today supplying millions of vaccine doses to more than 70 countries. Madam President, guided by my government's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, that is, working together for inclusive development for all and securing the trust of all, we have undertaken unprecedented steps aimed at economic and social transformation of India. The revolutionary initiatives undertaken by the government include the world's largest financial inclusion scheme, which covers 417 million aspirational Indians. Free health insurance coverage to 500 million. Provision of 150 million homes to the underprivileged. Loans at concessional rates to 140 million needy Indians for promoting entrepreneurship, out of which 76% of the beneficiaries are women. 50 million free gas connections to deserving women belonging to rural households, construction of 110 million toilets in the last 5 years, and bringing tap water connection to every household in the country by 2024. All these steps have contributed immensely in enjoyment of basic human rights by our people. Let me conclude by reiterating that we remain steadfast in our commitment to take all the possible steps to ensure fullest enjoyment of basic human rights of our people, including inclusive and sustainable development. India is building a better and fairer society at home. It is also contributing to a better and fairer world. I thank you, Madam President, for giving me the floor, and I wish you success in presiding over the Council. देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।